Last time जब ਆਪਾਂ present ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ dish that was like ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ and the stuff. Chef liked it but was up and down. पर आज ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ mystery box ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ. Surprised हूँ, shocked हूँ, nervous हूँ, curious हूँ, सारी mixed feelings है इस time पे. But let's hope जो भी होए अच्छा होए, easy बना दूँ या दिमाग जो भी recipes हैं collab करके जितना भी होए. So I'll try to give my best. रंग दिल की धड़कन भी लाते तो होगी। लास्ट राउंड में शेफ को मेरी डिश पसंद आई और मैंने एप्रन अर्न कर लिया है। और आज नेक्स्ट राउंड में अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा एक्साइटेड और लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट राउंड। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि मेरे को ब्लू एप्रन मिला है, तो आज मेरा दूसरा राउंड है और मैं देखना चाहूँगी कि कैसा चले। थोड़ी सी नर्वस तो हूँ कि शेफ़ विज ने आज क्या प्रेजेंट किया है, क्या सरप्राइजेस लाए हैं हमारे लिए। सो आई होप कि सारे चैलेंजेस मैं फुलफिल कर सकूँ। लास्ट राउंड मैंने क्वालिफाई किया और मुझे ये ब्लू एप्रन मिल गया। और नाउ नेक्स्ट राउंड लिटिल बिट नर्वस, but I'm really passionate about food and cooking, so fingers crossed. I think everything will go well and सब ठीक होगा। Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and welcome to Canada the Super Chef Season 6. Presenting sponsors is Real Canadian Superstore. More ways to save than any other major grocer. Spice partners, Shan Foods. Real authentic taste. Hospitality partners, Avid Hotels, and travel partners, Nanak Flights. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। I have been so impressed with the last 4 contestants. Unfortunately, we had to eliminate one contestant. ਹੁਣ next episode ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ contestants ਕੀ ਆਪਣੀ passion, अपना फूड एंड अपना फ्लेयर दिखाते कि नहीं। इस वास्ते लेट्स कॉल द कंटेस्टेंट्स। सो वेलकम शेफ्स। लास्ट राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। Kritika, Asha, Simran, Jaspreet. Are you ready for this challenge? Yes. Yes, chef. Yes, chef. Are you ready to create Canada the Super Chef, the winning dish? यस शेफ। But ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿਆਂ। And khul ja simsim, open it. ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਕਸ ਖੋਲਿਆ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਲੂਲੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਨੂਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਗੋ ਪਲਪ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਨੋਨ, ਬਟ ਫਿਊ ਵਰ ਲਾਈਕ ਬਟਰਨਟ ਸਕੁਆਸ਼ ਐਂਡ ਆਲ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕਦਮ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਆਲ, ਇਟਸ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਬਟ
ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਯੂ ਨੋ try new things and showcase your talent. जब पहली बार मिस्ट्री बॉक्स खोला था तो मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि कौन से इंग्रेडिएंट्स थे बिकॉज रोज़ की कुकिंग में ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होते. आज फॉर एग्जांपल जैसे बटरनट स्क्वाश था तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता था कि लाइक उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ मैं अपनी डिश में, कैसे उसका अलग बनाऊँ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਸਟੱਫ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਿਸਮੈਚ ਸੀਗੇ ਬਟ ਕੁਝ ਸਟੱਫ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ वो मेन टास्क सीगा. मिस्ट्री बॉक्स आया तो थोड़ी सी घबराहट तो लगी क्योंकि उसमें किनुआ था. मैंने किनुआ बहुत कम इस्तेमाल किया है. बटरनट स्क्वाश उसका तो सूप बनाते हैं पर इस डिश में कैसे इस्तेमाल करें तो थोड़ी घबराहट लग रही थी पर सोचा कि हाँ कुछ इसका बन सकता है 4 इंग्रेडिएंट्स. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਰਨਟ ਸਕੁਆਸ਼, ਕੀਨਵਾ, ਮੈਂਗੋ ਪਲਪ, ਸੋਇਆ ਪੌਂਜ਼ੂ ਸੌਸ, ਬੈਲ ਪੈਪਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 55 ਮਿੰਟਸ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਉਸ 55 ਮਿੰਟਸ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸਾਡੀ ਪੈਂਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਮੀਟ, ਚਿਕਨ, ਪਨੀਰ, ਬਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਈਸਿਸ. ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ you are not allowed to go back. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਕਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਦੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. Your timer for Real Canadian Superstore Pantry starts now. पेंट्री पे जाने के बाद मेरे को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे एक्चुअल में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर की कुकिंग में यूज़ करते हैं, जो मैं यूज़ कर सकती हूँ. जैसे मैंने एग प्लांट लिया, मैंने थोड़ी बहुत ग्रीन अनियंस लिए, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा सोया सॉस, टेरियाकी सॉस ली. तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे अपनी डिश में. पेंट्री में देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया आया कि चलो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट लेके उसमें से मैंने विनीगर, लेमन जूस ये सब पिक किया और थोड़े डिफरेंट कलर के पेपर्स so that my dish will be multicolored and more colorful on the plate. ਜਦੋਂ ਪੈਂਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਚੱਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. ਢੂੰਡਣਾ, ਲੱਭਣਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ असेंबल करना. पैंट्री एक्चुअली कंफ्यूजिंग लगी मुझे बिकॉज बहुत ऑप्शंस थे और उस टाइम तक मैंने सोचा नहीं था, डिसाइड नहीं किया था कि व्हाट डिश आई एम गोना मेक. तब तक लजानिया एंड बर्गर के बीच में मैं कंफ्यूज थी तो मुझे जो चीज़ें समझ आई वो उठा ली. आशा जी कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है. अच्छा, आपकी बास्केट तो बिल्कुल खाली खाली लग रही है. मेरी बास्केट देखिए ना, सब मैंने पनीर ले लिया, हाँ. थोड़ा लेमन जूस, एक एवोकाडो हो गया मेरे पास. अच्छा, मैं थोड़ी सी पेपर्स देख रही हूँ जैसे कि क्या तो मैरिनेटेड वाली हूँ. सिमरन, जी सर. your mind is running a mile a minute. It is. I have too many things to make. I don't know कि मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ. Real Canadian Superstore Pantry के लिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੈਗੇ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ. 10 ਮਿੰਟ ਸੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਕੂ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚੱਕਿਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਡ ਪੈ ਗਈ ਤੇ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਬਾਸਕਟ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ.
क्योंकि मैं 10 मिनट के बाद मैं वापस नहीं जा सकता ਸੀਗਾ कोई भी इंग्रेडिएंट पिक करने वास्ते। सो अगर कोई चीज़ मेरे को एक्स्ट्रा सीगी सो दैट्स गुड रैदर दैन कि मेरे को कट रहे। 5 more minutes left. 5 more minutes left. हाँ, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Real Canadian Superstore Pantry will close in exactly 3 minutes. Real Canadian Superstore Pantry is closed now. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ Real Canadian Superstore Pantry ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਲੋ ਰਿਤਿਕਾ, हेलो ਕੀ ਬਣਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ? ਪੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਦੈਟ ਆਈਲ ਮੇਕ 버ਗਰ ਪੈਟੀਜ਼। ਹਾਂ ਹਾਂ आई हैव burger bun, hopefully everything. हाँ. So आलू उबल रहे हैं, squash is on the gas again, उन्हों कर रही हैं and बाकी using the pulp, I want to create some drink or maybe dessert. It's still like I have not. Still thinking. हाँ जी, वो जो भी मेरा समझ आएगी, टाइम बचेगा, हाँ. accordingly I'll do. Okay. Are you confident कि you'll be finished in 45 minutes? शायद हो जाना चाहिए है। शायद हो जाना चाहिए। थोड़ा जिहा हौसला ते होर दिखाओ। हाँ जी, I'll try. All right. Okay. Chef Jaspreet, Yes. I love your tattoos. Thank you so much. मतलब ਟੈਟੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ। I mean ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਨੋ ਟੈਟੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। I have a long story. Actually मैं कॉलेज ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਤੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ I have to get a tattoo. So this was my first one. That's Virdi. So Beautiful. then I started making from the local vendors the thing from India because I don't have the money. तो उसके बाद मैं इंडिया वो कनाडा आ गया then I got something तब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन तो एक्सपेंसिव वाले चुच आ गया अच्छा so now I have couple of more and still coming up. As far as the dish is concerned, what are you thinking? Actually I'm making some kind of a gourmet burger which has like cottage cheese and quinoa patty. And I'm gonna go with the side with the veggie sticks. Okay, make sure your quinoa doesn't burn. Yep. Give it a nice stir. I just need more water. Did you put some salt in the quinoa? Not While you yet were because cooking? I wanna add in the last because I wanna make a mixture. So I'm Okay. gonna balance the salt. I'm looking forward to tasting it. Sure.
ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਮਰਿੰਡ ਤੇ ਪੌਂਜ਼ੂ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਅਰੋਮਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ what are you making for us So chef, मैं बना रही हूँ honestly one of my husband's favorite dishes. हाँ क्योंकि वो थोड़े health conscious हैं. अच्छा तो उनको थोड़ी healthy dishes, थोड़ी Chinese, Thai infused dishes उनको बहुत अच्छी लगती हैं. So I'm making a quinoa pulao almost हाँ with a glazed eggplant. And जो eggplant की जो curry है उसमें जो आपने ingredients दिए थे मैंने mango use कर लिया है. I've used the ponzu already. I've used some sesame seeds just to add extra flavor. और उसमें मैं ये cooked eggplant डालूंगी ताकि उसकी sauce properly incorporate हो जाए. okay you have lost around 15 minutes and you have around 30 minutes left Yeah. 30 minutes में ये खाना बनना plate होना Yep. you feel confident I'm definitely confident, chef. very confident Very confident. Good. बिल्कुल हो जाएगा. this is what you need in Canada the Super Chef confidence and focus Eight minutes to go. Asha ji looks finished. Simran is giving final touches to her dish. Jaspreet ਹਾਲੇ ਵੀ bread crumbs ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਤਿਕਾ ਨੇ ਹੈਮਬਰਗਰਸ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣ Chefs, 6 minutes left. And when I say hands up, it means hands away from your table. A minute and 33 seconds left. And ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ 55 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪੈਂਟਰੀ ਤੋਂ
ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ਸ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕੀਤਾ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਫੀਟ ਐਂਡ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ अच्छा और एक दूसरे को हाई फाइव तो कर लो कम से कम जाके दुआ करो कि कोई ना घर जाए बट एक को तो जाना पड़ेगा एक की जर्नी तो आज खत्म हो ही जाएगी शेफ्स It's time to present your dish. रितिका जी हाँ जी आइए सानू टेस्ट कराइए कि की बनाया तुसी रितिका हाँ जी तुसी साडे वास्ते की बनाया आज सो 4 ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਚੋਜ਼ ਬਟਰਨਟ ਸਕੁਆਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਪੈਟੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਟਰਨਟ ਸਕੁਆਸ਼ ਆਲੂ ਤੇ ਬੀਟਰੂਟ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਚ ਅਨੀਅਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਟਫ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਆਈ ਗ੍ਰਿਲਡ ਇਟ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਪੈਟੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦ ਨਟਸ ਐਂਡ ਦ ਪਲਪ ਮੈਂਗੋ ਪਲਪ ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ very unique idea very unique idea थैंक यू पिछली दफा you were so close to winning यस ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ ਹਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ 10 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਪਿਕਡ ਮੇਯੋਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਟਫ ਬਿਕਾਜ਼ 버ਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਆਈਟਮਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ 버ਗਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਚੋਜ਼ ਦਿਸ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ burger yes I know like east and west I know but then I chose this and कुछ ingredient रह गए but that's okay मैं इन्नी presentation तो इन्नी खुश नहीं है but taste would be 100% sure like थानू अच्छा लगेगा ठीक है मैं करके देखना हाँ जी what is this for ये cranberries just to eat little sweetness with the other flavors and this is all garnish हाँ जी but you cannot say कि ये hamburger है हाँ जी because classic hamburger में टमाटर onions Yeah. और lettuce yes होना बड़ा ही जरूरी है okay वही मैं lettuce भी नहीं लाई सी तो lettuce भी रह गया सीगा मेरा onions में पाए हैं and I put beetroot patties is tasty but something is missing I think कोई crunchiness is missing something is missing जो lettuce या bacon से आती है या sausages तो आती है वो थोड़ी crunchiness missing है ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੇਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੱਸੀ हाँ जी थोड़ी जी मिठा एक्चुअली पल्प करके भी बहुत ज़्यादा सीगा बहुत थोड़ा जिहा कंडेंस मिल्क यूज़ किया एज यूजुअल शुगर भी भुल गई सी ते जस्ट इट्स कर्ड पल्प एंड लिटिल बिट ऑफ कंडेंस मिल्क एंड थोड़ा जिहा मैं केसर दा वाटर यूज़ किया हाँ केसर ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ हाँ जी so that flavor is definitely there it's a good dish I'm impressed आगे देखो ਹੁੰਦਾ है की जो बर्गर के हिसाब से जैसे मेयोनीज और शुगर ये दो चीज़ें मैं बहुत मिस कर रही थी शुगर में मुझे ऐड करनी थी मेरी लस्सी में विच आई यूज्ड मैंगो पल्प के साथ बनाई थी एंड मेयो मैंने यूज़ करनी थी इसमें एंड प्लस लेटस आई मिस्ड तो या कुछ इंग्रेडिएंट मेरे रह गए थे वहाँ पे आशा जी यस सर आइए
डिश प्रेजेंट कीजिए। आशा जी, तुसी साडे वास्ते की बनाया आज? मैंने किनवा और स्टर फ्राई ऊपर से, और किनवा में थोड़ा सीजनिंग करी है रेड पेपर और लवंग से, और स्टर फ्राई में जो 4 इंग्रेडिएंट थे, द यांजू पोंजू सॉस, विनेगर, द स्क्वाश, सो वो सब डाला है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स, और एवोकाडो डाला है थोड़ा सा, तो उसको बैलेंस करने के लिए सारे टेस्ट को, थोड़ा सा एवोकाडो कूल टेस्ट होता है। सो लाल मिर्च दा की आइडिया? लाल मिर्च का उसमें सीजनिंग, किनवा में सीजनिंग, तो उसका फ्लेवर आएगा लाल। अच्छा, तो मतलब इसको मैं इसके एदे नाल खावा के एदे बिना खावा? अलग से खा सकते हैं, पर उसका फ्लेवर उसमें आ गया, उसके पकाते समय उसको डाला था। अच्छा। लवंग और उसका सीजनिंग डाली मैंने, क्लव्स की। श्योर कि कीनुआ और एग प्लांट ग्लेज के साथ you needed to do so much complexity with it. मेरे ख्याल से had you stayed just with quinoa and eggplant, you would have definitely gone ahead. But
देखने अगे अगे होता है कि मेरे को था कि मैं थोड़ा डिफरेंट करूं, थोड़ा अलग करूं, और मेरे को था कि सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो सकते हैं, थोड़े थोड़े करके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए थे अपनी डिश में। थोड़ा मैं कंफ्यूज तो हो गई थी उनके रिएक्शन से, बिकॉज मेरे को पहले लगा कि उनको अच्छी लगी, फिर उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर दिए हैं, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो आई थिंक गोइंग फोर्थ मे बी सिंपल एंड एलिगेंट फॉर्मेट यूज़ करूँगी ताकि ऐसे डिश अच्छी बने। शेफ जसप्रीत, यस शेफ। come and present your dish. ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद बहुत कुछ दिमाग च आया सी, बट आई केप्ट इट सिंपल। मैं कॉटेज चीज़ ते कीनोआ दी पैटी बनाई विद सम पोंजी सॉस इन इट एंड विद सम स्पाइसेस, एंड द बेस ऑफ द सॉस फॉर द बर्गर आई केप्ट इट द मैंगो डेविल सॉस दैट वाज लाइक मैंगो चिली सॉस विद सम शुगर इन इट, एंड लाइक वो वाला लाइक ग्रिल्ड वेजीज ऑन द बर्गर, like capsicum and mushroom, or मैं sauté किया था salt pepper and ponzu sauce on a bit, so have a tangy taste. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ डाल देता है veg crickets that has broccoli, carrots and cauliflower. I kept the same sauce, mango devil sauce, with the croquettes. Mango devil sauce? Yes. It's spicy. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਡੈਵਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ sauce. I kept it like With a little too devil on it. devil little red chilies poking out. Yeah. Hot croquettes, they look fine, nicely browned on them. So should I go croquette first? It definitely has use of good ingredients in it. ਜਿਹੜਾ ਪੈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੌਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And maybe because I was expecting in my mind ਕਿ it will be like a nice, like a smash burger, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ crispy ਵਕਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। But croquette is good, burger is good. Good effort. Thank you. Chefs, ਚਾਰੋਂ ਆਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। So first of all, congratulate yourself on that. ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸ਼ਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ, ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। Ritika and Jaspreet, you're both safe. You're going to the next round. Asha ji, your journey ends here. You are eliminated. एलिमिनेट हुए उसका थोड़ा अफसोस लग रहा है,
लेकिन ये बहुत अच्छी, मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही और पहली बार ही मैंने ऐसे किसी शो में पार्टिसिपेट किया है। तो अगली बार जो है मैं दोबारा पार्टिसिपेट करने को उत्सुक रहूँगी और कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं और प्रिपेयर्ड होके आऊँ और नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करूँ। So, next round, next challenge. I want to see more. I want you to taste your food. And I want you to be as creative as you have been. Thank you. Thank you very much.